हाय फ्रेंड्स, आम लॉजिक सिलेक्शन क्वेश्चन दे सारी से सिलेक्शन क्वेश्चन काउंसिल 2026 जो चारोटी ग्रुप थाए से ए ग्रुप टाकू आम आलोचना कर सारी। आज आम ग्रुप बी को आलोचना करवा। ग्रुप बी तार क्वेश्चन पढ़ दूसरी एवं तार उत्तर कौन हम कहूँ। क्वेश्चन है State the special rules of a figure third. State the special rules of a figure third. Answer होची प्रथम रूल टे हला the minor premise must be affirmative एवं द्वितीय रूल टे हला the conclusion must be particular. तापरे B, what is the fallacy of a composition? What is the fallacy of a composition? तार आंसर टे हला when we move or proceed from the distributive use of a term to the collective use. Example, 2 and 3 are even and odd. 5 is 2 and 3, अतएव 5 is even and odd. बर्तमान थ्रू आम कौटू कौटी प्रोसीड कले डिस्ट्रीब्यूटिव यूज ऑफ टर्म रु कलेक्टिव यूज को जाऊे। अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव यूज कौन ना आम 2 and 3 आर इवन एंड ऑड या आम डिस्ट्रीब्यूटिव भाव व्यवहार कले माने खंड खंड कर व्यवहार कले किंतु तापर वाक्य आम कहीदे 5 इज 2 and 3 ताकू एककालीन कलेक्टिव भाव व्यवहार कर 5 करदे 5 इज 2 and 3 अतएव 5 इज कंक्लूजन बाहरला 5 इज इवन एंड ऑड जोटा कि हम फॉल्स। एटा हम फालासी ऑफ कंपोजिशन। सी, व्हाट इज मटेरियल ओवरशन? क्वेश्चन हला व्हाट इज मटेरियल ओवरशन? आंसर हला डॉक्टर बेन हैज पुट फोर्थ ए फॉर्म ऑफ ओवरशन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस known as the material overson. In this overson, both the subject and the predicate of the overse are opposite or contrary to the subject and predicate of the overturned respectively. Here, both the quality and the quantity remains unchanged. For example, night is cold, it has the overturned रूपे नवा, day is hot, it have overse. D, give an example of illicit measure. Give an example of illicit measure. Answer रे हम लिखिबा when measure term is not distributed in measure premise but distributed in conclusion, it is called illicit measure. तार एग्जांपल दबा जोटा कि आम देखा ब्लैक बोर्ड रे लिखि दिया है तार एग्जांपल टी तथा पढ़ी दौची। ए ऑल एम इज पी मेजर प्रेमिस तापर माइनर प्रेमिस रे दबा ई नो एस इज एम अतएव कंक्लूजन यार बाहरिबो ई नो एस इज पी। यार फालासी कहीं इलिसिट मेजर हला ना यार मेजर टर्म पी टा मेजर प्रेमिस रे डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं कारण एरा ए रो प्रेडिकेट रूपे रही एवं यह कंक्लूजन रे डिस्ट्रीब्यूटेड हेची पीटी पीटा को मेजर टर्म कह जाए तेणु कंक्लूजन हला ई नो एस इज पी जेहेतु एटा नेगेटिव तार प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड तेणु प्रेडिकेट एठी डिस्ट्रीब्यूटेड हेची अर्थात मेजर टर्म टा मेजर प्रेमिस रे डिस्ट्रीब्यूटेड न हेई कंक्लूजन रे डिस्ट्रीब्यूटेड हेची जहा फल कि एटा फालासी हला इलिसिट मेजर। E, what is undistributed middle? Undistributed middle गोटे फालासी तेणु what is undistributed middle? तार आंसर टी हला when middle term is not distributed at least once in the premises, it is called the fallacy of undistributed middle. Example, A, all P is M, I, some S is M, अतएव जदि कंक्लूजन आम बाहर करवा
सम एसजीपी एथुर आम जानले एटा ब्लैक बोर्ड रे मध्य ताकू लिखि दिया हेची अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल एथुर आम जानले कोन ना ए रे ऑल पीजीएम एम टा रहिला मिडिल टर्म जोटा कि रहिची प्रेडिकेट प्लेस एवं आई कहा को डिस्ट्रीब्यूटेड करी नाही सो सम एसजीएम तेणु मिडिल टर्म दुईटा अंक डिस्ट्रीब्यूटेड हेला नाही दुईटा अंक प्रेमिस रे डिस्ट्रीब्यूटेड हेला नाही सो वी फाइंड द fallacy of undistributed middle. F. Construct the truth table for implicative function. Construct the truth table for implicative function. Truth function answer होची truth function of implicative function हला कोन TF रे दबा P implication रो चिन्हटी दबा Q P implication Q जोटा कि हमर ब्लैक बोर्ड रे मध्य लिखा है देखि पार TF रे दबा P implication Q truth table of it यार ट्रुथ टेबल टा कोन हबो ना P implication Q ताकू जदी ट्रुथ टेबल बाहर करबा P तळे हम लिखिबा 1100 Q तळे लिखिबा 1010 अतएव तार ट्रुथ फंक्शन टा हबो 1011 एथे कोन कले हमें ना T अर्थात ट्रुथ रा को हम 1 बोली धरले F टा को धरले 0 बोली जहा फल रे कि यार मैट्रिक्स नंबर इट्स मैट्रिक्स नंबर इज 1011 तार मझीटा सेटा होची मैट्रिक्स नंबर तापर G what are the valid modes of figure 4th what are the valid modes of figure 4th तार आंसर हैला ब्राह्मणटिप कामेनेस डिमारिस फेसापो प्रेसिशन ए जो पांचटी वैलिड मोड कुहा गला एगुडा होची फोर्थ फिगर रो वैलिड मोड H what is binary constant what is binary constant तार आंसर हैला binary constants are those constants which become meaningful when they stand in between two variables example P implication Q P disjunction Q P conjunction Q P equivalence Q P alternation Q एगुडा का हैला सब ये जो चिन्ह गुडी का कहली तथा कंजक्शन implication disjunction alternation equivalence यार चिन्ह गुडी का सब बेले रहिला मझी रे अर्थात P Q रो मझी रे इन बिटवीन टू वेरिएबल्स जहा फल रे एगुडा को जाय बिनारी कांस्टेंट किंतु negation is not a binary constant negation is not a binary constant negation टा गोटे binary constant हे परिबो नाही कारण एटा गोटे साइड रे रहइबो जहार बाम पट रहितिबो से negation चिन्हटी सेटा केवल ता पई व्यवहार करा दिबो I what is logical constant what is logical constant तार आंसर हैला logical constants are those constants whose values are permanent they cannot change from time to time सेमन केबेले चेंज होंति नाही तांकर वैल्यू गुडी को परमानेंट रहि थाय एग्जांपल हैला कंजक्शन डिसजंक्शन अल्टरनेशन इक्विवेलेंस इम्प्लिकेशन ए गुडी कर चिन्ह गुडी कर वैल्यू से गुडा सब बेले परमानेंटली रहि थांती जे what is reduction तार आंसर हैला reduction is defined as a process or method of proving the validity of modes in the imperfect figures by transforming them into the modes in the first figure अर्थात reduction is defined as the process or method of proving the validity of modes जो imperfect mode रो ताकू आमे perfect mode को आमे ट्रांसफॉर्म करिबा अर्थात proving the validity of modes in the imperfect figures by transferring them into the modes in the first figure को आमे ट्रांसफॉर्म करिबा imperfect figure गुडा को अर्थात जोटा सेकंड थर्ड फोर्थ रे रहिची से गुडा को सब फर्स्ट फिगर को ट्रांसफॉर्म करिबा
K. What is the argumentum ad vericundium? What is the argumentum ad vericundium? The answer is this fallacy means an argument in reverence to the authority. Here we appeal to sense of reverence for some authority like scriptures, words of the saint or scientists or some of institutions. We quote their words and argue instead of giving any valid reason. ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ନା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରଥମରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଥିବ ନହେଲେ ଶେଷରେ ସେ ସୋ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଦେବା ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟମ ଆଡ୍ ଭେରିକୁଣ୍ଡିୟମ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଥିବ ଏଇଟା କୋଉ ଫାଲାସି ବୋଲି କୁହାଯିବ ତେବେ ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନ କରି ଖାଲି ଦେଖିବା ଯେ ତାର ପଛରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ସୋ ଥିବ କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଥିବ ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବା ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟମ ଆଡ୍ ଭେରିକୁଣ୍ଡିୟମ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ ଫଲ୍ସ ଆଜ୍ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଜ୍ ସୋ। ଶେଷକୁ ରହିଲା ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ ଫଲ୍ସ ଆଜ୍ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସୋ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଫାଲାସି ଅଫ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟମ ଆଡ୍ ଭେରିକୁଣ୍ଡିୟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହୁଛି, ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ କୋଡ୍ ଅଫ ଲାଇଫ ଆଜ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ସୋ। यार मध्य शेषରେ ସେ ସୋ ଅଛି ତେଣୁ এই ସେ ସୋ ଯଦି ଲାଷ୍ଟରେ ରହିବ ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟମ ଆଡ୍ ଭେରିକୁଣ୍ଡିୟମ ଫାଲାସି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। L. What is the fallacy of accident? What is the fallacy of accident? The answer है fallacy of accident arises when one argues from a general rule to a special case. When one argues from a general rule to a special case. Example, water is liquid, ice is water, अतएव ice is liquid. ताहले एटा हला तारा example. M. What is the fallacy of a post hoc ergo propter hoc? What is the fallacy of a post hoc ergo propter hoc? The answer is this fallacy literally means after this, therefore due to this. The cause is an antecedent of the effect, but any and every antecedent is not the cause. If we take any and every antecedent of a phenomenon to be its cause, we commit the fallacy of a post hoc ergo propter hoc. This is a source of many superstitions or blind beliefs. Example, a newly married bride comes to the house and an old man suffers from fever. The bride is taken as the cause of the old man's fever. N. Give an example of a simple constructive dilemma. Give an example of a simple constructive dilemma. Example है, if A is B, then C is D. If E is F, then C is D. तार minor premise है either A is B or E is F है, अतएव C is D. In simple constructive dilemma, the consequent side remains same. Consequent side टा जो समान रहिथिबो एवं antecedent side टा अलग अलग रहिथिबो से क्षेत्र रे आमे तार नाम दबा simple constructive dilemma. What is dilemma? तबे तार आंसर है dilemma is a form of a mixed syllogism in which major premise is a compound hypothetical proposition, minor premise is disjunctive, and conclusion is either categorical or disjunctive. Example, if A is B, then C is D. If E is F, then G is H.
माइनर प्रेमिस हेबो आइदर ए इज बी और ई इज एफ ए अतएव कंक्लूजन आसीबो आइदर सी इज डी और जी इज एच तापर पी मिल्स वन प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन मिल तीनोटी प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन देचंती सेथि मध्यरु आमे गोटिए प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन कहिबा ताले मु तीनोटी जांक मध्य कहि दउची सेथिरु जेउंटा तुमको सुविधा लागिवो तमे सेठी मन रखि लिखिबो आंसर एक रहला whatever antecedent can be left out without prejudice to the effect can be no part of the cause एटा गोटे प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन आउथर पढ़ दउची whatever antecedent can be left out without prejudice to the effect can be no part of the cause तापरे आउ गोटे प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन होची when an antecedent cannot be left out without the consequent disappearing such antecedent must be the cause or part of the cause एटा हला दुईटी प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन तापर 3 नंबर टी हला an antecedent and a consequent rising and falling together in numerical concomitance are to be held as cause and effect तेबे ए तीनोटी प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन भितरु हमर परीक्षा पड़िबो राइट वन प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मील तेणु आम जे कोनसी गोटिए लिखि पारिबा ता भितरु क्यू व्हाट इज व्याप्ति तार आंसर थेला व्याप्ति is an unconditional and invariable relation of concomitance between the middle term and the major term, that is between hetu and sadhya. Vyapti literally means, it is very important line ta vyapti literally means the state of perversion. The relation of vyapti is universal and materially true. R. What is the 10th syllogistic rule? Syllogistic rule रे 10टी रूल अछि से 10टी रूल भितरु एगुडा को जामर पड़ जाए नंबर वाइज 10th जनरल syllogistic rule तबे जदि आमे 10th ले रूल टा पड़छि आमे केवल 10 नंबर टी लिखिबा 5th पड़ले 5 नंबर टी लिखिबा तेणु जो नंबर टा पड़थिबो से गोटे को आमे रूल टा को लिखिबा अर्थात व्हाट इज द 10th syllogistic rule पड़छि आमे लिखिबा कोन if the major premise is particular and the minor premise is negative no conclusion can be drawn एतक हैला बी ग्रुप रो हमर सिलेक्शन क्वेश्चन एवं या पर आमे आउ 2-3 दिन छाड़ी के आमे ग्रुप सी टार क्वेश्चन आंसर करिबा थैंक यू।